तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। Namaskaram. I said namaskaram. Welcome to MahaShivRatri 2022. Nice to see how the post-pandemic world looks like, but we are not really post, so just be a little careful. Either you must be masked or you shouldn't be breathing, one of those things you maintain, okay? இந்த 22 महाशिवरात्रि 2022 की महाशिवरात्रि में आपका स्वागत है। ये देखना बहुत अच्छा है कि महामारी के बाद की दुनिया कैसी है, लेकिन अभी भी सावधानी ज़रूरी है। कोविड बीत चुका है, लेकिन फिर भी अभी सावधानी रखनी होगी। या तो आपको मास्क पहन कर रखना होगा या आप सांस ना लें, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? Well, you know enough about MahaShivRatri by now. Essentially, it's an opportunity to be available to the natural grace that's available on this day because of the tilt and precession of the planet and a particular position in relationship with the sun in this part of the year, which is referred to as Uttarayana. In a year, there are 13 Shivaratris. This is the greatest of them all, so it's called MahaShivRatri. On this day, there is immense benefit in just staying awake. But it's my wish and my blessing that you should not just stay awake. You must get awakened today. Otherwise when? If not today, when? Hello? Don't postpone it, okay? Staying awake is important, spine erect is important, but becoming awakened is most important because the world sees much damage, much harm, conflict, environmental and ecological degradations, variety of problems. Most of these problems are not the consequence of human evil, no. Most of them are a consequence of human ignorance. This is why lighting up is most important. For all the millennials and generation, I don't want to use the word Z, I'll call you generation A or Alpha, you must get lit today. This is a lit night. In the MahaShivRatri na, तो अब तक आपको महाशिवरात्रि के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। ये एक महत्वपूर्ण मौका है। इस दिन स्वाभाविक रूप से जो हमारे ग्रह में ऊर्जा उपलब्ध होती है, उसके प्रति खुद को उपलब्ध होने का ये एक बहुत शानदार मौका है। ये मौका होता है धरती के झुकाव की वजह से और सूरज के साथ धरती के संबंध की
वजह से, ख़ास तौर पे धरती का ये जो हिस्सा है जहाँ अभी उत्तरायण चल रहा है, साल में 13 शिवरात्रियाँ होती हैं, 13 या 14 शिवरात्रियाँ होती हैं। उसमें से ये शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। आज की रात सिर्फ जगे रहना ही काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरी इच्छा और आशीर्वाद ये है कि आपके लिए ये रात सिर्फ जागरण की रात ना रहे, बल्कि आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। अगर आज आपके चैतन्य की जागृति नहीं होगी तो कब होगी बताइए? तो इस मौके को टालिए मत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ठीक से नहीं हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हमारी मिट्टी की ही हालत ख़राब है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इंसानी बुराई का नतीजा नहीं है, ये इंसानी अज्ञानता का नतीजा है। इसीलिए चैतन्य की जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। आज की रात आपको प्रज्वलित होना है, क्योंकि ये प्रज्वलन की रात है। इस रात का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये केवल जागरण की रात न रहे, ये आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। இந்த மகாசிவராத்திரி நாள் நமக்குள்ள கொஞ்சம் விளக்கு பற்றி வச்சிடலாமா? ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்க? என்ன இது 7 மணிக்கே நான் உங்கள் தூண்டி தூண்டி பார்க்கணுமா? நைட்டெல்லாம் நான் எப்படி உங்கள் பார்த்துக்கிறது? So this MahaShivRatri is special because it is this MahaShivRatri, so it is very special. Apart from that, after 2 years of being in a very restricted life, every one of us, due to the pandemic, many of us have suffered immense losses in terms of loved ones, in terms of near and dear. We've lost… almost everybody has lost somebody who's dear to them. This has been the story of the world, but human beings are resilient. Even if you throw them into a pit of fire, they can crawl out and still come out smiling and living strongly. This is what we must do, because the most precious thing that we have in our life is just life itself. There's really nothing else. Keeping it up, keeping it fired up, keeping it exuberant, keeping it ecstatic is very important. Because if this life doesn't happen in its fullest possibility, the life doesn't blossom within you. You made money, you got qualifications, you became so many things, doesn't mean anything, because those are all social things that people will forget in 5 days' time. But how profoundly and how exuberantly you lived, that's all there is with life. So today, if you've not been doing that, today is the day to get ignited. If we'd been doing that, today is the day to really rev it up to its fullest possibility. Where there's a whole array of artists, they'll keep the night pumping. Well, midnight and post-midnight, there are meditative processes. This is not looking very alive and exuberant for me. Yeah. Especially because you are masked, you got to be making noises, otherwise I don't know what's happening with you. இந்த கோவிட் முடிச்சிட்டு 2 வருஷம் கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டம் நடந்திருக்குது. तो ये महाशिवरात्रि विशेष है क्योंकि ये महाशिवरात्रि है, इसलिए ये विशेष है। और दूसरी बात ये है कि पिछले 2 सालों में आपका जीवन बहुत रुकावट भरा जीवन आपने जिया है। उस तरह का जीवन जीने के बाद इन 2 सालों में हमने काफ़ी नुकसान भी झेले हैं, आर्थिक नुकसान हुए। आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया,
यही पूरी दुनिया की कहानी रही है। लेकिन इंसान एक बहुत ही मजबूत जीव है। इंसान ऐसे होते हैं कि अगर आप उन्हें आग में फेंक देते हैं फिर भी वो उससे रेंग कर बाहर आ जाएंगे मुस्कुराते हुए। ये है एक इंसान होने की काबिलियत। तो जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है और वो है जीवन खुद। इस जीवन को पूरी तरह से जीवंत रखना, उल्लासित रखना, आनंदित रखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये जीवन पूरी तरह से पल्लवित नहीं होता, अपनी संपूर्ण संभावना तक खिलता नहीं है, तो आपने अपने जीवन में कितना पैसा कमाया, क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल की, आप किस पदवी तक पहुँचे, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ये चीज़ें लोग थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। लेकिन आप कितना गहरा जीवन जीते हैं, आपका जीवन का अनुभव कितना गहरा है और आप कितना उल्लासित जीवन जीते हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये अभी तक आपके साथ नहीं हुआ है तो आज रात ये संभावना है। आज रात हमारे साथ कई सारे कलाकार हैं जो पूरी रात आपको जगाए रहेंगे। तरह तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी, बीच रात एक मध्य रात्रि ध्यान होगा और कई सारी चीज़ें होंगी। अरे, मुझे आप लोगों में कोई उल्लास ही नहीं दिख रहा। आपने मास्क पहन रखा है, आपको कुछ आवाज़ें निकालती रहनी होंगी, वरना मुझे पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत। जय 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 महादेव। जय जय